In Constitution of India, what should be, or what should we read generally for preliminary? I give you a very brief hint about the topics and about the nature of questions. As far as topic is concerned, I think there are certain topics which are very important. I'm writing it quickly. You can also write it quickly. अब देखो आपको कि आप कुछ छोड़ ही नहीं रहे हो सर, सारा तो आ ही गया. Basic information has to be now gathered, so nothing great. Now, as far as legislature is concerned, I have not seen much question on this legislative procedure, etc. So we are not required to focus much on that point because that is not going to help us. So we will not be concentrating much on that. But those things which have been in news recently, they will be asked and they can be asked. So be careful. So legislature may be union and state, but not very important according to me. But few questions can be there if they are in news. Like now, earlier there was question on money bill. Now there was question, or now there can be question on farm bill, whether that is valid exercise of legislative power or not. So that kind of question may be raised. So be careful about that. Is this clear? Now then, Supreme Court, High Court, there have been questions, many questions. Supreme Court, High Court, many questions. Many questions in this, many questions. Many questions. So Supreme Court, High Court, now sometimes even subordinate judiciary. They have asked question on subordinate judiciary. I have just seen the question. Subordinate judiciary. I'll tell you which kind of question is asked and which particular things to be read, because if we read all, then this is not going to help us. Then if I see this contents page, Union and its territory, citizenship, no. Citizenship, again Citizenship Amendment Act and citizenship can be a question because this has been news recently. So be careful. Whatever has been in news recently, you read on that. And I have written a little bit material on that point as well. Fundamental duties, Union Executive, Judiciary, I have written. Union territories, they have asked question on Delhi. In UT, they asked question on Delhi. This can be question again. Panchayats, they have asked GK kind question, where it was for the first time, where Panchayati Raj was introduced for the first time. So that kind of question. Center-state relation, you may be asked a question on different doctrines. Doctrines in legislative relation. Commission and councils, I don't think that everything they will ask you, but yes, election commission, now they've asked very basic question on this. Now, which is constitutional, which is not constitutional, something like that. Is this clear? Something like that. GST, now they've asked question on by which amendment you introduced GST. So, this can also be described as legal GK. Legal GK, now you have given this term this time, but the question in 2019, many questions are on legal GK. Like I saw a question, there was a question, where is this Indian Legal History Museum? This is legal GK. Again, they asked the question, who was the first woman judge in India? High Court.
Then again they have asked question regarding some amendment which was in recently in news. अब जो अमेंडमेंट आ रहे हैं उस पर भी सवाल पूछेंगे, जैसे 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, NJC Act. NJC Act has been now little earlier, but that can be questioned. Now, Farm Bill, it has been so much in news this recently, so they can ask you question related to now entries, etc. Entry 33 of list 3. Entry 33 of list 3. I'll show you that this is written in material. This book, An Idea of Constitution, it is written there also. I have seen it. So if this is in news, like GST was in news earlier, like Farm Bill is in news now, so this will be a question. And now cooperative society has been in news or not? Tell me, there has been a decision. Rajendra and Shah. This is the question, everybody knows. So if you read too much and you do not understand the exam, then you are not going to pass the examination. All these recent cases are very, very important. They have asked too many questions on recent issues and cases. Then again, very simple provisions. Like you can expect question on amendment. You can expect question on emergency. Amendment, they have asked question on article as well as cases. Here I have seen articles, not cases. Generally cases will be asked only when they are recent and very important. Famous one. Not all cases. So don't focus much on cases. Famous or recent. Other cases are not so important. Like now Kesavananda Bharati is very famous case. So that can be asked. But not all cases. Then this now then they have asked a question of GK kind, like in a schedule. This is all written in your material. Idea of Constitution, be careful. Now see, in cases they are asking it also that how many judges were there, who were the judges there, only of recent cases, not of all cases. You start reading name of judges of all cases, that will be completely uncalled for, unwanted, undesirable, unreasonable. Only recent or only famous cases, especially in recent cases. Even in famous cases, the decision important, judge's name is not important. Now, it may be important in legal GK that Kesavananda Bharati had how many judges? What was the majority? Not otherwise. Is this clear? So this can be a legal GK question as well. So these are the topics. In these cases, now GK kind question. Not very in-depth analysis. GK kind question is expected. Is this all right? Now, then I'll see the question also, but let me tell you a little bit about the topic also. Now, like you read preamble. अब देखो preamble से कैसे कैसे सवाल बनाए इन्होंने. Preamble is part or not. Preamble, now what it said, what it does, what are the words. I have told you everything, and if I have not told you, if I have not taught you, you read this book, Idea of Constitution. I have written everything there. How to memorize, what to do, what are the questions. I have given question also in that chapter. You solve them, that will suffice. So preamble में 3 parts are there. Now country, then the citizen, then the constituent assembly. 3 C's का formula मैंने बता रखा है. So how to memorize that? 3 C's. 5 words in the beginning, they are ideals, sovereign, socialist, secular, democratic, republic. So they can ask you the order also. Citizens को आप कैसे कैसे justice दे रहे हो, social, economic, political. ऐसे तो question आएंगे. Liberty किस प्रकार का? Thought, expression, belief, faith and worship. Now equality किस प्रकार का? Of status and opportunity. Now
you have ensured all these things, now you are promoting fraternity. So fraternity, promotion and ensuring of other things. Is this clear? तो ध्यान से पढ़ना. दिस डेट 26 नवंबर 1949 वी डू हेयर बाय. तो पूछा कि भाई किसने अडॉप्ट किया? तो वी मीन्स वी द पीपल ऑफ इंडिया, नॉट ऑल. It is not Constituent Assembly which adopted. We, the people of India, adopted, enacted. So these kind of questions can be asked in preliminary, whether it is part or not. Kesavanand Bharati clarified this. Reberwari said no. Kesavanand Bharati said yes. So this is what is preliminary examination. You are required to read everything, but not in deep, detailed way. That is not desirable at all. Then you go to the second part, union and its territory, the part one basically. Now union and its territory, I hope that they can ask you question how many states are there, how many union territory, because they have asked question how many high courts are there. So how many states are there, how many union territories are there? I think 28 states now. And union territories, हमने लिखा है आपके मेटल में, सब पढ़ लेना, ये सब मैंने लिख रखा है इसमें, कभी गलती मत करना. वहां ये देखो बहुत सारे आपके एग्जाम में फैक्चुअल क्वेश्चन भी इन्होंने पूछे हैं. फैक्चुअल क्वेश्चन क्या पूछे कि भाई पूछ दिया कि कौन सा लोकसभा, अभी कौन सा लोकसभा चल रहा है? हाँ? 17 तो पहले था, अब 18th हो गया. अब देखो कैसे ये सब समझोगे, ये सब कैसे याद रहेगा मुझे. यहां लिखा है ना टेरिटरी, देखो पहले ही लिखा है टेरिटरीज ऑफ 28 स्टेट्स 8 यूनियन टेरिटरीज. तो मुझे ये याद था, आप 9 कह रहे थे. अब देखो लोकसभा मुझे पढ़ना है कितने हैं, तो मैं यहां क्या किया, मैं यहां देखा कि देखो जी ये स्टार्ट किया मैंने पढ़ना, तो ये मैं आ गया 18 पर. अब ओम बिरला इसके अभी स्पीकर है, तो मुझे पता चल गया 18. पिछली बार 17 था. क्वेश्चन आया है फैक्चुअल क्वेश्चन, ये लीगल जीके भी कहलाता है. कौन सा लोकसभा चल रहा है, अभी उसके स्पीकर कौन है. अब ये जो चीफ जस्टिस हैं आपके, ये कितने नंबर पर आए? 48th एन.वी. रमन्ना. अब आपके मेटल में लिखा हुआ है ये, तो आप ऐसे ही पढ़ते रहेंगे. इज दिस क्लियर? 28 स्टेट्स 8 यूनियन टेरिटरी. अब मैंने भी सवाल बनाया, जैसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछेगा भाई व्हेन दिस कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, तो मैंने लिखा है कि देखो भाई बहुत सारे आर्टिकल, जैसे सिटीजनशिप से रिलेटेड आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, इलेक्शन से रिलेटेड, डेफिनेशन से रिलेटेड, स्पेशल प्रोविजन से रिलेटेड, ये सब 26 नवंबर 1949 को आ गए. कौन कौन से? तो मैंने आपको बता दिया. देखो सिटीजनशिप से रिलेटेड जनरली 6, 5 to 9, देन इलेक्शन से रिलेटेड 324, then definition in constitution. This can be another question where various definitions are given in constitution 366. And then these special provisions. Special provisions में not all, special provisions में 379, 80, 88. You are not required to remember article. I am not saying that. You just look into this. अच्छा ये special provisions में ये सारे 5 है देख रहा हूं मैं. And 393 and 394. You see 393 and 394? Enforcement. 394 तो enforcement है. And 393 क्या है? Short title. So these things, title, enforcement, नाम पहले आ गया. Citizenship, because we have been made citizen of India. Election will be conducted, so election वाला आ गया. Definition which will be applicable right now, and special provisions, these have been enforced on 26th November 1949. Factual questions. अब ऐसे आपको पूछ दिया कि भाई ये बताओ कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो ओरिजिनल प्रति था और उसमें जो ये फोटोग्राफी वगैरह थी, आपने देखा होगा हमने इस आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में भी हर जगह ये फोटोग्राफ लगाया है. ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का फोटोग्राफ है. ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही फोटोग्राफ आपको इस चैप्टर में पार्ट में मिलेगा. हमने वहीं से कॉपी किया है इसको. इज दिस क्लियर? एन आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में मैंने वहीं से कॉपी की. तो अब आपसे सवाल पूछा कि ये किसने जी इसकी चित्रकारी की, किसने इसको लिखा, तो नंदलाल बोस उनका नाम है.
तो दीज आर फैक्चुअल क्वेश्चंस। ऐसे बहुत सारे सवालों को इकट्ठा करके मैंने इस बुक आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया है। नाउ इट इज अपॉन यू टू रीड और नॉट टू रीड, आपकी मर्जी, आप पढ़ो ना पढ़ो। तो ऐसे यूनिक फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, बी केयरफुल। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे 366 में डेफिनेशन लिखा, 367 में इंटरप्रिटेशन लिखा है। इंटरप्रिटेशन मीन्स that now if any word is not defined in this in constitution, where will you look? General Clauses Act. Where it is written? 367. 367 it is written there, 367. Is this clear? So this kind of questions may be expected. So इस तरह के सवाल भी आएंगे लीगल जी के, इसी को हम कह रहे हैं बार बार। अच्छा, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे कॉम्पिटिटिव, कोऑपरेटिव, कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म क्या है? कॉम्पिटिटिव, वेर यू compete with each other. One state is now fighting with another state or competing with another state to attract investment. But unless until there is cooperation between two units, center and state, you cannot grow. So cooperative federalism. Collaborative federalism, let us move together. Let us all collaborate. Let us all put our resources together and let us grow. Collaboration. So you will have to understand that. Read little bit. Conceptual questions भी आ सकते हैं. Vertical reservation, horizontal reservation. Conceptual question भी पूछ देंगे. ये तो पूछ ही देंगे वो रिजर्वेशन की व्यवस्था कहाँ है, तो 1516 आपने लिख दिया. Is it fundamental right now? It is enabling provision only. Yes. There have been recent amendments also. 15(6) जोड़ दिया आपने. इकोनॉमिक रिजर्वेशन की बात की ना आपने, कोटा की बात की ना आपने, सब जोड़ा है धीरे धीरे आपने. 16 में भी जोड़ा कोटा, सेपरेट कोटा. बैकलॉग वैकेंसीज विल बी ट्रीटेड एज सेपरेट कोटा. तो इस तरह के भी सवाल आएंगे, तो वो आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा. नॉथिंग, नॉट ए बिग डील. नाउ वर्टिकल रिजर्वेशन, जो आपने कहा कि भाई ओबीसी को इतना दे दो, एससी को इतना दे दो, एसटी को इतना दे दो, आपने सेपरेट कर दिया. Now within that reservation you have reservation for women. ओबीसी में भाई women को रिजर्वेशन आपने दिया, कहीं 40%, कहीं 50% दिया रिजर्वेशन. So if OBC's candidates are selected, out of them 50% OBC should be women. So this is horizontal reservation. Vertical horizontal reservation क्या है ये भी पूछ लेंगे. अभी आया ना एक डिसीजन 2020 में, उत्तराखंड का डिसीजन था, जिसमें लिखा now reservation is not your fundamental right. You cannot claim reservation as a matter of fundamental right. So now that judgment is relevant. They're not going to ask you very stale question. This is not going to happen, I must tell you. So now you have seen preamble. I have deviated a little bit. Now Citizenship Amendment Act. This can be a beautiful question. मैंने इंटरव्यू के लिए भी अभी सवाल बनाया था कहीं. Which part have been taken from where? This is written here. Doctrine of prospective overruling was propounded or was followed where? First state which was created on linguistic basis, Andhra Pradesh. Citizenship Amendment Act मैंने लिखा है ना, Citizenship Amendment Act 2019 amended Citizenship Act 1955 and liberalized the grant of citizenship for non-Muslim migrants from Pakistan, Bangladesh, Afghanistan who have entered India before 31 December 2014. अब उसमें 4 स्टेटमेंट दे देंगे and पूछेंगे which one is correct. They will not be treated as illegal migrant because they have migrated before 31 December 2014. अब इन्होंने क्या किया कि जो ये नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस है उसके लिए पहले 11 इयर्स का टाइम था, अब इन्होंने उसको कम करके 5 साल कर दिया कि भाई ये 5 साल से रह रहे हैं ये लोग नॉन मुस्लिम्स फ्रॉम दिस कंट्रीज, सो दे विल बी ट्रीटेड एज इंडियन सिटीजन. सो दे डिक्रीज द पीरियड ऑफ नेचुरलाइजेशन फ्रॉम 11 years to 5 years. This is what is basic amendment. So this can be a good question. What are the different methods of acquisition of citizenship? By birth, descent, registration, naturalization, incorporation of territory. मैंने 5 methods यहाँ लिख दिए. Is this clear? So this can be question. Now fundamental right में फिर इसी प्रकार से state के definition पे सवाल. Agency instrumentality test, RD Sethi versus International Airport Authority.
Bhikhaji is an important case on doctrine of eclipse, or doctrine of severability, doctrine of eclipse. Bhikhaji Narayan Dhakaraj versus State of MP. Golaknath versus State of Punjab. They said law includes amendment, but this decision was overruled by Keswanand Bharati, and they said law does not include amendment. Then we brought 24th amendment in which year? ये भी सवाल हो सकता है. गोलकनाथ के बाद ही 24th amendment आया था. 24th amendment was basically in question in this Keswanand Bharati. This can be another question. In Keswanand Bharati, which amendments were challenged? बताओ. केशवानंद भारती which amendment were challenged? अब मैंने लिखा है ये सब. In Keswanand Bharati, which amendments were challenged? 24th was challenged very clearly. 25th was challenged very clearly. And 29th was also challenged in Keswanand Bharati. So this can be another important question. The whole factual, legal, GK के question, factual question होंगे, और most of the questions वैसे ही होंगे जैसा मैं बता रहा हूं आपको. पहले भी आ चुका है ये. New concept of equality was propounded in which case? E.P. Royappa versus State of Tamil Nadu. Now, in which case adultery was decriminalized? Joseph Sain 2018 decision. Chief Justice of India Deepak Misra has given the decision. Is this clear? Validity of 93rd Constitution Amendment Act was challenged in which case? Ashok Kumar Thakur. Now, this 103rd Amendment Act is related to what? 103rd Constitutional Amendment Act is related to what? Economic reservation. And it has been challenged in which case? It has been challenged in which case? The case name is Youth for Equality versus Union of India. Writ petition 73/2019. Youth for Equality versus Union of India. It has been referred to a 5-judge bench. अब देखिए क्या निर्णय देते हैं. That case which I was talking about, Mukesh Kumar versus State of Uttarakhand. Mukesh Kumar versus State of Uttarakhand. No fundamental right to claim reservation. Mukesh Kumar versus State of Uttarakhand. Mukesh Kumar versus State of Uttarakhand. Shreya Singhal, you know. अब एक सवाल है आपके डीजेस में. Right to silence is contained where? See page number 69 of your this idea of constitution. Article 20 clause 3 contains right to silence. Right to silence. Now, individual has right to die with dignity. Which case? Common cause versus Union of India. Common cause 2018. Common cause versus Union of India. Right to privacy से related case, K.S. Putta Swami, everybody knows. Saira Bano, 3-2 judge, 5-bench decision. Justice Nariman. अब देखो इस पे बहुत सारे ना epistolary jurisdiction. What does it mean? Epistolary jurisdiction. Epistolary. Article 32. Epistolary jurisdiction. अब फंडामेंटल राइट्स के इसमें लगभग 170 क्वेश्चंस हमने दिए हुए हैं, जो बहुत हैं. एक बेसिक आपको बता देगा, आपको बेसिक समझ दे देगा फंडामेंटल राइट का, स्पेशली फॉर योर एग्जामिनेशन. I don't think you will have any problem. But let me tell you, in fundamental right, there are various recent decisions जो मैं आपको update करता रहूँगा. But I have got very few decisions with me as well. इसमें बहुत सारे points ऐसे ऐसे आए ना जिस पे चर्चा हुई है. जैसे एक केस था, ये देखो, ये केस है इंडिबिलिटी क्रिएटिव प्राइवेट. Now this kind of questions may be there. This is on Article 19. Indelibility
Creative Private Limited versus Government of West Bengal. This is writ petition civil number 306 of 2019. Justice D.Y. Chandrachud and Hemant Gupta. Here there was a film, the name of film is Bho Bhovishyotar Bhoot by government of, now what the government of West Bengal did, they imposed a ban on screening of this film. They said you cannot exhibit this film. Now Article 19 gives me right to disseminate information. I have freedom of speech and expression. Film is one of the mode of expression. So how can you prevent me? Police said it will lead to breach of public peace and disorder. It is your duty to maintain public peace and order. Can you prevent me from exercising my fundamental right on this ground that there will be public public disorder is the thing which you are required to maintain. You maintain order. Police wala to Supreme Court gave a decision and said it is the duty of a state to maintain this order, and on this ground state cannot. Court further said police are not in a free society the self-appointed guardians of public morality. आप डिसाइड नहीं करेंगे फिल्म मॉरल है या इमोरल है. The uniformed authority of their force is subject to rule of law. Many cases police do this. So court said no, you can't do it. Supreme Court held that free speech under Article 19(1)(g) cannot be gagged by fear of mob violence. Mob violence के आधार पर आप हमारे freedom of speech and expression को 2019 में rather Article 19 में prevent और prohibit नहीं कर सकते. Is this clear? एक देखो ऐसा ही जजमेंट आया और आप इसको डिटेल में भी पढ़ सकते हो. मैं तो आपको संक्षेप में हिंट दे पाऊंगा अभी. सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सुभाष चंद्र अग्रवाल. सुभाष चंद्र अग्रवाल आप जानते हैं ना, ये आरटीआई एक्टिविस्ट. अब ये लीगल जीके हो गया, ये लीगल जीके. सुभाष चंद्र अग्रवाल इज आरटीआई एक्टिविस्ट. जस्टिस संजीव खन्ना, एनवी रमन्ना एंड डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सीजेआई इज ए पब्लिक अथॉरिटी. RTI is very much in news always. Public authority under RTI Act. So this kind of question is expected. ये केस पूछ दिया आपसे. This is 2012 का 10 का अपील है. अपील नंबर 10444 of 2010. 10044. 10044 2010. बीके पवित्रा एक केस आया 2020 में. बीके पवित्रा अभी भी एक जजमेंट आया, मैं उस पर भी बता दूंगा आपको. बीके पवित्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इसमें इन्होंने कहा दिस इज ऑन रिजर्वेशन ऑन कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी. They said consequential seniority, you will read this in Article 16, consequential seniority, that if a reserved class student is promoted later on and he is made senior, that is what is consequential seniority. So he will remain senior forever because he has been given reservation in promotion. So by promotional reservation, he will become senior. So that is what is consequential seniority. 16, Article 16, you can look into for this purpose. I have written in your material also. You see this, an idea of constitution, you will find it there. So now on this point, they said that the consequential seniority is perfectly valid. The bench also judged that this law has cured the deficiency noted in earlier BK Pavitra, and it does not amount to usurpation of judicial power by the state legislature. Reservation Act 2018 is valid exercise of enabling power conferred by Article 16(4)(a). So basic point A, consequential seniority is valid. Then they said, अभी हमने आपसे कहा, now there can be many questions. मैंने कहा यूनियन लेजिस्लेचर से उतने सवाल नहीं पूछते, बट वॉट एवर इज इन न्यूज दे कैन आस्क यू. लाइक दिस वाज इन न्यूज वेदर दिस फार्म बिल इज मनी बिल और नॉट.
Then there was news, Aadhaar bill was money bill or not. This kind of question arises. Basically, Aadhaar पे ये बहुत प्रश्न उठा था. So that then the question arose that the speaker has power to decide whether a bill is money bill or not. I have written in again in this material, I hope. मैं question दिखाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा, सब मैंने idea of constitution में लिखा है. Now what are the powers of a speaker? So a speaker has got power to decide this question of money bill, not money bill. But whether this power exercised by speaker is subject to judicial review or not, तो उस पे Supreme Court ने कहा कि it is subject to judicial review. Power of a speaker to decide the question of money bill is this is the case. Roger Matthew versus South India Bank Limited. Chief Justice N.B. Ramanna, Ranjan Gogoi, Justice D.Y. Chandrachud, Deepak Gupta, Sanjeev Khanna. 5-judge bench. They said certificate of a speaker regarding money bill is not conclusive. Certificate of a speaker regarding money bill is not conclusive. Is not conclusive. That is subject to judicial review. Now, what is Babita Punia case? तो इसीलिए कहते हैं आपको ना थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ना, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, थोड़ा सा न्यूज़ सुनना. They were giving permanent commission to women, but not in all streams. उन्होंने कहा इसमें नहीं होगा, उसमें होगा. So they said it is against Article 14. So now they have allowed this permanent commission to women in all streams. Now it is valid. Now it is. Earlier it was not so. They said it was against Article 14 because they allowed commission in certain cases and they did not allow in certain cases. They bifurcated कि कुछ में करेंगे, कुछ में नहीं करेंगे. उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं चलेगा, सब में करना है, आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते. सो रिसेंट केसेस पे भी बहुत क्वेश्चन आएंगे. जैसे अभी मध्य प्रदेश में लालजी टंडन ने एक बार वो बुला लिया था फ्लोर टेस्ट के लिए, और मुख्यमंत्री उस समय थे कमलनाथ जी ने कहा कि भाई कैसे आपने बुला लिया, हमने तो रिकमेंड किया नहीं, और हाउस सेशन में था तो आपका काम नहीं है बुलाने का, स्पीकर करता. तो उस पे गवर्नर ने कहा नहीं, because this is a situation where it is not clear whether the council of minister enjoys the confidence of legislature or not. That is why it is necessary for governor to conduct a floor test, and for that I have called this floor test. I have called for floor test. So they said no, you could not do it because it was in session. But Supreme Court said in that case, Shivraj Singh Chauhan versus Speaker MP Legislative Assembly. Shivraj Singh Chauhan versus Speaker Legislative Assembly. Governor can ask for floor test
even if legislature was in session. ना ये रिसेंट केसेस पे आएगा बहुत क्वेश्चन, प्लीज टेक केयर. देन दिस जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता. जस्टिस एल नागेश्वर राव, संजीव खन्ना एंड बी आर गवई. क्योंकि ये रिसेंट डिसीजन है इसलिए जजेस का नाम लिख दिया. दिस 2022 डिसीजन. पूछा था ना कोर्ट ही सब कुछ कर दे, उन्होंने कहा नहीं आपको करना होगा, स्टेट विल हैव टू डू इट, वी विल नॉट डू इट. हम नहीं करेंगे इसको, हम नहीं करेंगे इसको, आप करो. You do it, we are not going to do it. Is this clear? You do it, we are not going to do it. Now, court cannot lay down yardstick to determine this inadequacy of representation. State is obligated to collect quantifiable data regarding adequacy of representation. ये स्टेट का काम है ना. फिर उन्होंने आगे भी बहुत सारी चीज कही. नागराज जजमेंट विल हैव प्रोस्पेक्टिव फैक्ट. यू आर रिक्वायर्ड टू read this case, Jarnail Singh versus Lakshmi Narayan Gupta, L. Nageshwar Rao, Sanjeev Khanna, where the court said that it is state's duty to collect quantifiable data state is obligated to collect quantifiable data regarding adequacy of representation. Court cannot lay down any yardstick to determine inadequacy of representation. Court नहीं lay down करेगा yardstick to determine inadequacy of representation. You lay down. It is your duty. I am not going to do it. You don't pass your task to me. It is your duty to do it. State has to do it. देखिएगा इसको, ये important decision है, आ जाएगा. मैं आपको कुछ डिसीजन और बताऊंगा अभी, बट जस्ट होल्ड ऑन ना. अब दूसरी ओर थोड़ा चलते हैं, और भी रिसेंट डिसीजन हम लोग देखेंगे, हम भेजेंगे भी आपको, डोंट वरी. मैं जहां से शुरुआत करा था, मैंने आपको सिटीजनशिप बता दिया. अब देखो फंडामेंटल राइट में ना आप प्रिलिमिनरी के लिए यदि पढ़ रहे हो तो एक तरीका बना लेना, विच आई हैव सेड इवन इन दिस मटेरियल. आई होप in this book, Idea of Constitution, I have written that you are required to raise 6 fundamental questions. To whom it is available, against whom it is available, what is available, whether it is absolute or restricted. जैसे बहुत सारे आर्टिकल हैं वो एब्सोल्यूट हैं, there is no restriction, and there are certain articles where like Article 19 there are so many restrictions. Article 25 it is written subject to the other provision of this part, and public order and morality and health, you will have this right. But Article 14, you have written nothing like that. You have written nothing like that. You have written just, the state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India. Now, you can be asked question on wordings also. जैसे 2014 का जो मैंने क्वेश्चन देखा ना, उसमें जो भी आदमी सवाल बनाया था, he has done it now just to test your incisive way of study. Because उसने क्या किया, जैसे लिख दिया क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के बता रहा हूँ, see your incisive study will help. Which of the following is true about Supreme Court? अब इन्होंने क्या किया, लिख दिया Supreme Court shall sit in such places as are approved by Chief Justice of India. Obviously Chief Justice of India will take a call under intimation to the President. No.
ये तो अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट चाहिए। इंटीमेशन, इंटीमेशन में तो मैं तो आपको सूचित कर दिया। अप्रूवल का मतलब है कि आपका हमें सहमति चाहिए। अब देखो कितना, एक वर्ड बदल दिया, इंटीमेशन। फिर वैसे ही दूसरे में भी किया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन एनलार्ज द जुरिसडिक्शन एंड पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नो, प्रेसिडेंट कांट डू इट, पार्लियामेंट विल डू इट। अब पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। ऑल अथॉरिटीज इंक्लूडिंग आर्म्ड फोर्सेस इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया सेलेक्ट इन द एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब तुम पढ़ के देखो कि लिखा क्या है इस बैरक में आपके, पढ़ के देखो ना क्या लिखा है। ये लिखा है कहीं? लिखा होगा ऑल जुडिशियल एंड सिविल अथॉरिटीज, मिलिट्री नहीं लिखा है। कौन से आर्टिकल में है ये? 144, पढ़ के देखो। अरे फटाक से पढ़ो, 144 क्या है। अब देखो, तो ऐसे ही क्वेश्चन उन्होंने मिलिट्री लिख दिया। So you have to read your bare provision with great care and caution. If the question is like this, generally ऐसा क्वेश्चन ये डिफिकल्ट आया हुआ है, 2014 का डीजीएस क्वेश्चन है, दिस इज डिफिकल्ट क्वेश्चन। बहुत क्लोज ऑप्शंस इन्होंने बना दिए इसमें। सो इट्स अब देखो, जैसे इन्होंने फिर बनाया इधर क्वेश्चन, नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टिकल 311। ये सब ना क्वेश्चन बेसिकली आईएएस में आते थे ज्यादा, लग रहा है वहीं से पिक करके डाल दिया इसमें। 311 बेसिकली सिविल सर्वेंट्स का कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है, जुडिशरी को उससे ज्यादा मतलब भी नहीं है, एंड दे डू नॉट आस्क यू एज मच, बट दिस इज ओल्ड क्वेश्चन, 8 साल पहले पूछा हुआ है, तो उन्होंने कोई आईएएस के पेपर से उठा के डाल दिया है। मुझे तो ये दिख रहा है आईएएस में इस तरह के बड़े बड़े सवाल आते थे, तो वही वाला डाल दिया। अब वो ऐसे सवाल नहीं आ रहे तो उतना घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन फंडामेंटल राइट में आपको एक चीज ध्यान रखना है कि 6 बातें पढ़नी है। टू whom, against whom, what is available, whether it is absolute restricted, whether it is self enforcing, non self enforcing। ये मटेरियल में लिखा है, आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने इस बुक में लिख दिया है। सो सी केयरफुली, आर्टिकल 17 लिखा, यू नो, अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश, बट अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश लिखने से अबॉलिश नहीं हो गया। सो फॉर दैट वी हैव enacted a law, Protection of Civil Rights Act 1955, Untouchability Offences Act 1955। So just by writing you are not doing it, so you will have to make law for that purpose। Is this clear? ठीक है। फिर आप फंडामेंटल राइट में देखो, बेसिकली आर्टिकल 14, 15, 16 पे भी सवाल आया, मैंने बताया भी रिजर्वेशन पे अभी आपका ये 103rd अमेंडमेंट भी आया। सो यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ दैट बिकॉज दिस कैन बी ए क्वेश्चन इन एग्जाम, दैट उत्तराखंड डिसीजन केम। आर्टिकल 21, 20 सबको पढ़ना है। फंडामेंटल राइट में नो escape route, you will have to read all articles, you will have to read all articles। 33 is also relevant, where you can impose certain restriction on fundamental right। 34 is martial law, one word apply कर लेना। 35 is that the parliament can restrict fundamental right, state legislature cannot make law to abridge your fundamental right, you remember that, or restrict fundamental right or suspend fundamental, state legislature can't do it। Article 35 very clearly says that, sorry, Article 35 very clearly says that। Is this clear? तो ध्यान से देख लेना। 36 to 51 जो डीपीएसपी का पार्ट है, which is very very important again, so you may be again asked a question on that। Even now recently there was some debate and discussion on this uniform civil code article 54, article 44 that's wrongly 54। so 36 to 51 it doesn't have 54, it has 44 only। So 44, clear? So you just inform yourself what is there। I have written in your material also that even in this case, Muhammad Ahmad Khan versus Sahabano Begum, Sarla Mudgal, they have said it again and again। John Valamatam, they have said it at several times that uniform civil court is necessity now of the law। अब सवाल क्या पूछेंगे, कौन सा इसमें डीपीएसपी है, कौन सा डीपीएसपी में नहीं लिखा है। एक जगह उन्होंने ऐसे ही सवाल बनाया, प्रमोशन ऑफ जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। अब ऑप्शन बनाया, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम लेजिस्लेचर।
देखो फ्रॉम एग्जीक्यूटिव वहां ऑप्शन बना दिया लेजिस्लेचर एंड वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, उन्होंने 4 बना दिया ऐसे ही और पूछा कि इसमें से गलत कौन सा है। तो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव है, नॉट फ्रॉम लेजिस्लेचर। सो दिस इज व्हाट इज प्रिलिमिनरी। अब एक जगह एज पे पूछा, तो मैंने आपको कई बार बताया होगा, नहीं बताया होगा तो अभी बता दे रहा हूं। आर्टिकल 45 हैज दिस मैटर दैट यू शुड प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो 6 years। तो 4, 5, 6 आई कैन रिमेंबर। अब उन्होंने पूछा कि भाई ये 6 years वाला प्रोविजन कहाँ है, ये डीपीएसपी है कि फंडामेंटल राइट है? This is the kind of question. So one who has read carefully, now he or she can do it. There has been many amendments in this DPSP by 42nd Amendment, 39A, equal justice and free legal aid. Free legal aid, 39A, village panchayat, 40. So you are just required to keep this in mind. क्या चीज कहाँ लिखा है, one word. सबसे पहले तो definition है 36 में, सेम एज 12 स्टेट का डेफिनेशन जो फंडामेंटल राइट में, सेम डेफिनेशन इन डीपीएसपी 36। 37 it says that the DPSP will be fundamental in the governance of the country, though it is not enforceable. 38 talks of social order. देखो now public welfare and social order is mentioned in 38. 39, this is Charter of Social and Economic Justice, especially BC. 39D, equal pay for equal work. 40 is organization of village panchayat. 41 is right to work. देखो ना, वन वर्ड तुम्हें पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो याद नहीं होगा। कभी मिलाने वाले में पूछ देंगे मैचिंग। इज दिस क्लियर? 42 is also social provision. 42 मैटरनिटी रिलीफ। अब देखो लीगल जीके में सवाल पूछा आपसे, वही कितने वीक्स का मैटरनिटी लीव मिल सकता है? टू 2017 में इसको बढ़ा के 26 वीक्स कर दिया, पहले 12 वीक्स था। अब ये देखो लिखा है पेज 115 पे, हमने लिखा है यहां, पेज 115 पे मैंने लिखा। आप पढ़ोगे तब तो, आप पढ़ोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा दैट दिस हैज बीन अमेंडेड। लिविंग वेज कितना है? 10,300। This is also written on page. This is what is legal GK. And this is in Constitution also. Maternity relief. 43 living wage. 43A participation of workers in management of industry. ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। Promotion of cooperative societies 43B. It was added by 97th Amendment. Cooperative. This can be important because this was in news. Uniform Civil Code 44. 45 आपको बता ही दिया, free and compulsory education to children. No? The state shall endeavor to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years. And after 6 years? फंडामेंटल ड्यूटी में भी लिखा है, क्या लिखा है? पेरेंट्स को ध्यान देना पड़ेगा आफ्टर 6 years। देख लीजिएगा। प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससी एंड एसटी। देखो ये कैसे याद होगा? व्हेन यू रीड रिजर्वेशन, then there was question that in one case just to enforce this 46 they enacted a law and they provided reservation to many people belonging to this SC and ST that was challenged in court of law. So 46 याद हो जाएगा आपको, अच्छा वहां पढ़ा था। And this was in controversy with Article 29 and Article 15. So you have to read like a story. You cannot read like now a particular fact. Raise level of a standard. Health policy 47. Agriculture and animal husbandry 48. You just pick up the important words. Environment 48A. Monument 49. Separation of judiciary from executive 50. And IPS, International Peace and Security 51. हमने एक लिस्ट बनाया है अमेंडमेंट्स इन डीपीएसपी कब कब हुआ, पेज
118 पर, पेज 118 ऑफ आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल ड्यूटीज, कैसे ध्यान करोगे फंडामेंटल ड्यूटीज? अब देखो मैं तुम्हें तरीका बताता हूं। देर आर सर्टेन ड्यूटी टुवर्ड्स नेशन, देर आर सर्टेन ड्यूटी टुवर्ड्स स्टेट और अदर सोसाइटी, एंड देर आर सर्टेन ड्यूटी टुवर्ड्स योर सेल्फ individual. So three kinds of duties are there. If you read carefully, पहले लिखा है abide by constitution, respected and national flag, national anthem, भारत के प्रति, देश के प्रति हो गया. Then to cherish and follow the noble ideal which inspired our national struggle for freedom, country के प्रति हो गया. To uphold and protect sovereignty, unity, integrity of India again towards country. Is this clear? To defend the country and render national service again towards the country. So these four are towards the country. भाई तुम बताओ, नेशनल फ्लैग का, नेशनल एंथम का सम्मान नहीं करना चाहिए? इसमें रटना क्या है? तुम्हें आएगा ऑप्शन तो ठीक कर देना। टू फॉलो एंड चेरिश द नोबल आइडियल्स व्हिच इंस्पायर्ड फ्रीडम स्ट्रगल, कैसे बनता भारत? तो ध्यान कर लो, एक स्टोरी बनाना पड़ेगा ना कि भारत को बनाने में जिन बातों का ध्यान रखा गया, जो हमें आइडियल्स इंस्पायर किए, वो फंडामेंटल ड्यूटी में उसको हमें अभी भी चेरिश करना है। पीछे की चीजों को भूलना नहीं है। जो हमें आज मिला है, ये ध्वज, ये झंडा, इनका भी सम्मान करना है, टू रिस्पेक्ट, और इस कंट्री को बचाने के लिए अपनी जान लगानी है, टू डिफेंड। आपने लिखा है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट, एंड इफ देयर इज नेसेसिटी विल डिफेंड ऑल्सो। तो अपने आप को एक गाइडेंस दो ना। मैं और भी तरीके इसका बनाया हूं, क्लास में बताऊंगा आपको, बहुत अच्छा बताऊंगा, केक खिलाऊंगा इसमें आपको, अच्छा बताऊंगा, बट अभी नहीं बता पाऊंगा, थोड़ी लंबी कहानी है। आपका बर्थडे मनाएंगे, चॉकलेट केक खाएंगे, एनवायरनमेंट में जाएंगे, वहां पर घूमेंगे, सब इसमें लिखा है। मैं दिखाऊंगा कैसे, बट नॉट राइट नाउ, अभी हमारे पास उतना समय नहीं है, मैं थोड़ा जल्दी में रहूंगा। तो आपको मैं बता दिया, अभी क्या बताया कि 4 तो कंट्री के प्रति है, देख लो ध्यान से। टू प्रोटेक्ट एंड अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक तो है ना? टू डिफेंड द कंट्री एंड इफ नेसेसिटी विल प्रोवाइड द सर्विस। इज दिस क्लियर? अब कंट्री तुम्हारी सुरक्षित हो गई, अब सोसाइटी में आ जाओ। चलो देखते हैं। टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट, आपस में भाई बंधुत्व तो बनाओ, नहीं तो मारपीट करते रह जाओ। हम हिंदू, तुम मुस्लिम, वो सिख, वो ईसाई, यही करोगे कि भारत बनाओगे? इज दिस क्लियर? कहा जा रहा है ना, सोसाइटी को भी अच्छा करना है, कॉमन ब्रदरहुड। क्लियर? और कह रहा है टू रेनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी। अब देखो कैसे याद करते हैं, जैसे 5वें में हमने कहा हिंदू मुस्लिम नहीं करना है, वैसे ही महिला पुरुष नहीं करना है। याद हो गया? 5वें में ये लिखा है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम भी नहीं करना और महिला वर्सेस पुरुष भी नहीं करना। टू रेनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू वुमेन। याद हो गया? भाई तभी तो समाज में एकता आएगी। नहीं हिंदू वर्सेस मुस्लिम करते रहो, सिख वर्सेस क्रिश्चियन करते रहो, तो कैन यू यूनाइट द सोसाइटी? नो। हिंदू नो, मेल वर्सेस फीमेल करते रहो, नो। तो दोनों चीजें लिख दी। अब इससे आगे बढ़ो। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, और इस तरह से हमारा कंपोजिट कल्चर बन रहा है। हिंदू, सिख, ईसाई, हम सब हैं भाई भाई, कंपोजिट कल्चर बना दिया। Is this clear? To protect and improve the natural environment, life support system बहुत जरूरी है। भाई देखो, हमने आपस में दोस्ती तो कर ली, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, हो गया। महिला पुरुष भी कोई डेरोगेशन नहीं होगा, सब बराबर। बट इफ लाइफ सपोर्ट सिस्टम इज नॉट गुड, कैन यू सर्वाइव एंड सस्टेन? तो लाइफ सपोर्ट सिस्टम तो तुम्हारा एनवायरमेंट है, क्लीन एयर, क्लीन वाटर, क्लीन सॉयल, बेटर सॉयल। क्लीन एयर चाहिए ना, क्लीन वाटर चाहिए ना। तो एनवायरमेंट को अच्छा बनाएंगे तभी तो सोसाइटी को सुंदर कर पाएंगे। ठीक है, आगे चले। अच्छा जी, टू डेवलप। अब देखिए नाउ, टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव नेचुरल एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। इज दिस क्लियर? टू डेवलप साइंस। अब देखो अपने आप पे आ जाओ। अब तुम हमेशा वैसे ही का वैसे कर रहे हो, मैं बार बार तुमसे बार बार कर रहा हूं, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, सोच सोच के पढ़ो, समझ के पढ़ो। ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, ये कैसे वो कैसे।
सर ये बताओ सर, फंडामेंटल ड्यूटी कैसे याद होगा, बचपन से कर रहे हैं, नहीं हुआ आज तक। मैं बताऊंगा तुम्हें। अरे भाई, ड्यूटी राष्ट्र के प्रति, ड्यूटी समाज के प्रति, और ड्यूटी स्वयं के प्रति, याद कर लो। राष्ट्र के प्रति ड्यूटी क्या हो सकती है सर? तो राष्ट्र के ध्वज का सम्मान नहीं करोगे, राष्ट्रगान का सम्मान नहीं करोगे, नहीं हम तो नहीं करेंगे, तो फिर तुम्हें सजा दी जाएगी। उसके लिए लिखा है वो भी इसमें, क्या सजा मिलेगी। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड, हमारे देश में बड़े लोगों की आदत है, जब तब रेल को जला देते, जब तब गाड़ी को जला देते, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते। ऐसे ही आपका समाज बन जाएगा। कितना नुकसान होता है। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सेलेंस इन ऑल स्फेयर। नाउ हम बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा। इफ आई एम टीचिंग यू वेल, आई एम कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ ऑफ दिस नेशन। दिस इज द बेस्ट नेशनल सर्विस विच आई कैन डू। हर आदमी अपना काम ईमानदारी से करना शुरू कर दे तो राष्ट्र आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? भारत में क्या है, हम ज्यादातर हम काम करना ही नहीं चाहते। आप ऐसा नहीं करेंगे। It shall be the duty of every citizen who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child, as the case may be, what, between age of 6 to 14, added by 86th Amendment Act 2002. अब ये देखो, अब ये जनगण मन क्या है, नेशनल एंथम है। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो देखो, तुम तरीका बनाओ ना, नेशनल एंथम, नेशनल एंथम किसने लिखा, क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर। तो कुछ तरीका बनाओ, जनगण मन, नेशनल एंथम, रविंद्रनाथ टैगोर, कुछ बनाना तरीका, हम भी बना देंगे। फर्स्ट स्टैंजा सॉन्ग भारत भाग्य विधाता वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज नेशनल एंथम ऑन 24 जनवरी 1950। हो गया एक लीगल जीके का क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन। 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया नेशनल एंथम की तरह। और फर्स्ट स्टैंजा को हम लोग यूज करते हैं सर। कितने मिनट, कितने सेकंड में गाते हैं? 52 सेकेंड्स। और सबसे पहली बार इसको गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के। अब आप आ गए अगले भाग में, यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो प्रेसिडेंट कौन बनता है, कैसे बनता है, क्या है इलेक्टोरल कॉलेज प्रेसिडेंट का? तो ध्यान रखना, प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में स्टेट का भी रोल होता है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल नहीं, एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा। बट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हमने एक बड़ा अच्छा कॉम्परेटिव चार्ट भी बनाया है इसका। ऑल मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, लोकसभा, ऑल मेंबर्स इलेक्टेड, नॉमिनेटेड बोथ। अब देखो, यही न्यूएंसेस ध्यान रखना होता है। 52 टू 62 इज प्रेसिडेंट, उसका भी वन वर्ड है। मेरा लेक्चर सुन लेना, इस पे मैंने बोला था 40 आर्टिकल्स इन 15 मिनट्स। एक लेक्चर मैंने डाला हुआ यूट्यूब पे। आप नहीं सुनना चाहते हो तो बड़ी बात है, बट छोटी बात यही है कि आप सुन लोगे तो 40 आर्टिकल्स आपको 15 मिनट्स में वास्तव में याद हो जाएंगे। यदि कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया तो आप बना डालोगे उसको, उसमें तरीका भी बताया मैंने। ठीक है, री इलेक्शन भी हो सकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द ओनली प्रेसिडेंट हु हैव बीन इलेक्टेड ट्वाइस, and Dr. Neelam Sanjeev Reddy is the only president to have been elected unopposed. Legal GK. Unopposed Neelam Sanjeev Reddy. And Dr. Rajendra Prasad has been elected. He can be impeached and this and that. He has different powers. No? He can nominate 12 members in Rajya Sabha. He has power to address both houses. He has different powers. He is required to give previous sanction on money bill and bill for formation of new state, to nominate 2 members in Lok Sabha, which has been removed by 104th Amendment Act 2020. अब देखो, ये भी एक सवाल हो गया। 104th Amendment Act 2020 एंग्लो इंडियंस वाला हटा दिया हमने, उसको एक्सटेंड करना था, नहीं किया हमने।
अच्छा, एक बार सवाल पूछा कि ऑर्डिनेंस कितने समय तक रहता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डिनेंस जो है वो 6 मंथ्स तो रहेगा ही रहेगा, और जब पार्लियामेंट कम्स इन सेशन देन विद इन 6 वीक्स इट हैज टू बी रीअप्रूव्ड, अदरवाइज इट विल ऑटोमेटिकली लैप्स। तो मैक्सिमम टाइम हो गया 6 मंथ्स 6 वीक्स। शत्रुघ्न चौहान, ए 3 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट डिले इन डिसाइडिंग मर्सी पिटीशन, ये भी क्वेश्चन है डीजेएस का। Delay in deciding mercy petition is a sufficient ground for commutation of death sentence. This is a question in DJS examination. Different powers of President, Attorney General, Council of Minister. You just have a glance, very important. Solve all these questions. I have given sufficient number, almost 100 questions. So this will make you very. Power of a speaker पे भी सवाल आया। लोक अब एक सवाल है, पार्लियामेंट में है कौन? मैं बहुत बार बताया हूं क्लास में, आर्टिकल 79 से ये स्टेट में भी है। स्टेट में भी व्हेनेवर वी से स्टेट लेजिस्लेचर इट इंक्लूड्स गवर्नर। in center whenever I say parliament it includes even president। 79, article 79। and there 160 कैसे याद करते हैं? यस, देखिए इन्होंने फॉर्मूला पकड़ा हुआ है। 79 में 89 जोड़ोगे तो स्टेट का तुरंत मिल जाएगा। सिमिलर प्रोविजन एड 89। ये बहुत जगह मैंने अपने लेक्चर्स में बताया हुआ है, हाउ टू रिमेंबर ऑल आर्टिकल्स, उसमें भी बोला हुआ है। आप ध्यान से देखना वहां जाके, जैसे मैंने यहाँ तक भी बोला कि देखो 52 5 + 2 7 और 7 के बाद 8। तो जो यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ते हो ना 52 to 78, याद ही नहीं करना किसी को। अब ये तुम देखोगे तब तो लेक्चर यूट्यूब पे है, बट देखना नहीं, ठीक है ना? सब कुछ लिखा हुआ है वहां, बट नहीं देखना, क्योंकि फिर पास ही कर जाओगे, सब मेरा नाम हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। पार्लियामेंट देखो कितना मोटा मोटा मैंने लिखा है, पार्लियामेंट इंक्लूड लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। देखो कितना मोटा मोटा लिखा है, दिख रहा है आपको कितना मोटा मैंने एक लाइन में बना के रिवर्स में लिखा, एन आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। बट आप देखोगे तब तो, मैं तो यही कर सकता ना, दोस्त लिख के दे दिया। नाउ एक सवाल उठा, नाउ व्हेन मनमोहन सिंह वाज इलेक्टेड टू राज्यसभा देन ही वाज नॉट रेजिडेंट ऑफ असम एंड ही वाज इलेक्टेड फ्रॉम देयर। सो क्वेश्चन अरोज कि रेजिडेंस इज ए क्राइटेरिया फॉर इलेक्शन टू राज्यसभा। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्लैरिफाई किया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो भी केस लिखा हमने, कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नो, रिक्वायरमेंट ऑफ डिलीशन ऑफ रेजिडेंस इज वैलिड and there is no such requirement. Is this clear? लोकसभा में कितने मेंबर, राज्यसभा में कितने मेंबर? 250 राज्यसभा में, यहां पर 552 मैक्सिमम। इज दिस क्लियर? 2 एंग्लो इंडियन वाला अब तो हट गया, तो 550 हो जाएगा। पावर ऑफ स्पीकर, he can decide whether the bill is money bill or not, that is his prerogative, but I have just told you that this prerogative is subject to judicial review, so be careful. You read all these articles, मैंने ब्रैकेट में हर जगह आर्टिकल भी लिख दिया है, पार्लियामेंट्री टर्म्स भी लिखा है। इज दिस क्लियर? कहाँ के कितने मेंबर्स हैं वो भी लिखा है। अब मैं थोड़ा आपको क्वेश्चन पढ़ के भी सुनाऊंगा। पावर ऑफ गवर्नर पे भी पूछा है, ये भी पूछा है कि गवर्नर होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। One person can be governor of 2 or more states, and when he is governor of 2 or more states, he will get salary from both states according to the proportion. Is this clear? And who will decide the proportion? कुछ लिखा होगा ना ऐसा? कुछ नहीं जानने का, कुछ नहीं करने का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भाई बताओ ना, तुम भी तो कुछ बताओ, कैसे होगा काम? खोजो ना, ढूंढो। ढूंढना बाद में बताना, चलो अभी नहीं जानना चाहते। अच्छा, 15% का ये जो बार लगाया कि जो भाई हमारे लोकसभा में या लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर्स आते हैं, मैक्सिमम उनके 15% मेंबर्स जो है वो मिनिस्टर बनाए जाएंगे। विच अमेंडमेंट? विच अमेंडमेंट?
91st Amendment Act of Constitution, 91st Amendment Act. मिजोरम में भी इलेक्शन हुआ था. जनरल रूल इज लेजिस्लेटिव असेंबली शुड हैव मिनिमम 60 members. But in Goa, in Mizoram, you have how much? गोवा में हुआ था इलेक्शन, मिजोरम नहीं, मणिपुर में हुआ था. 40. गोवा 40. एंड सिक्किम में कितने हैं? 32. सिक्किम में 32. राज्यसभा इज परमानेंट हाउस, लोकसभा इज नॉट परमानेंट हाउस. यू नो दिस. नाउ यू रीड दिस चार्ट. अब एक क्वेश्चन पूछा, हाई कोर्ट कितने हैं? देखो हमने पहले ही लाइन में लिखा है हाई कोर्ट कितने हैं. तुम्हें अभी बताया ना 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी, जैसे भी सवाल आ जाएंगे. इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन भी पढ़ने हैं. बी केयरफुल. 25 in number high court. Sikkim has its own high court, you know this. CJI की तनख्वाह कितनी है? 2.8 lakhs. I have given it in chart. Now CJI can fix place of Supreme Court anywhere. Seat. ये भी आया हुआ DGS में question. Fixed by CJI with the approval of President. अच्छा, ये एक आया सवाल. देखो अब लीगल जी के क्या हो सकता है. एक सवाल पूछा इन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट 2019, नो ये इसमें कितने जजेस बढ़ाए गए? अब जजेस की संख्या क्या है? तो 34, 33 judges plus 1 chief justice. No, this has been done by 2019 amendment. This was a question in 2019. तो ऐसे सवाल देखो बहुत रिसेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं. अच्छा, हम आपसे सवाल पूछते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय नाउ सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट इज डिफाइंड वेयर? कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट एक्ट, which section? Section 2 of the act states that contempt of court means civil contempt or criminal contempt. Huh? Section 12 provides for punishment. How much is the punishment for contempt of court? बताओ. 6 months or fine up to 2,000 rupees or with both. 6 months simple imprisonment, fine of 2,000 or with both. Original jurisdiction, appellate jurisdiction, federal court, special leave jurisdiction. 136. Curative petition can be filed. For this, Supreme Court has enacted rules. In which order of Supreme Court rules? Which order? Which order of Supreme Court rules? Order 48 of Supreme Court rules 2013. Order 48 of Supreme Court rules. Supreme Court can make rule under Article 145, you know this, rule making power. और ये कितने सीनियर मोस्ट जजेस को जाता है? पहले 3 सीनियर मोस्ट जजेस को. क्यूरेटिव पिटीशन विच इज री-रिव्यू पिटीशन. अच्छा, मैं आई आस्क यू क्वेश्चन, प्रेसिडेंशियल डिस्प्यूट को कितने जज बेंच सुनते हैं? कितने लोग बताएंगे? रेज योर हैंड्स. प्रेसिडेंशियल इलेक्शन डिस्प्यूट को कितने लोग, कितने जजेस की बेंच सुनती है? रेज योर हैंड्स. मैंने कहा रेज योर हैंड्स. बस ये भी इतने ही लोग बता सकते हैं. ये देखो फर्स्ट पेज पे लिखा है. आप देखो कुछ भी ध्यान नहीं देते हो. यूनिक इंफॉर्मेशन है. लिखा है कि नहीं? Presidential election dispute is heard by Constitution Bench of Supreme Court. When I say Constitution Bench, it means 5-judge bench. Division bench, 2-judge bench. Single bench, 1 judge. Division 2. Full bench, 3. Constitution bench. अच्छा, ओके. Supreme Court's jurisdiction can be enlarged by whom? Parliament. Under which article? 138.
138 वन वर्ड दिया हुआ है तुम्हारे आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, वन वर्ड लिखा हुआ है, देखो ये सब वन वर्ड है, पढ़ना इसको, पूरा चार्ट बनाया हुआ उसमें वन वर्ड का, एक एक वर्ड लिखा हुआ है इसमें, इसमें भी लिखा हुआ है रिवाइजरी एडवाइजरी सब लिखा होगा। जैसे ओरिजिनल देखो 131 कॉन्स्टिट्यूशनल 132, सिविल 133, क्रिमिनल 134, सर्टिफिकेट 134, फेडरल 135, एसएलपी 136, रिव्यू 137, एनलार्जमेंट 138, रिट 139, ट्रांसफर 139 है, एंसिलरी 140, लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स 141, एनफोर्समेंट ऑफ डिक्री और जजमेंट 142, रेफरेंस 143, all civil and judicial authority to act in the aid of Supreme Court 144, rule making power of Supreme Court 145, कुछ लिखा होगा ना, all expenses of Supreme Court to be taken from consolidated fund of India, and all servants and all officers will be appointed by Supreme Court Chief Justice, कुछ लिखा होगा 146 में, देखो ना कुछ है कि नहीं है, 147 में इंटरप्रिटेशन। तो ये तुम्हें आदत बनानी पड़ेगी देखने की। विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस ऑन रिव्यू पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन? अशोक हुर्रा, रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा, वेरी फेमस केस, रीड इट। अच्छा, कितनी बार प्रेसिडेंट ने अभी तक रेफरेंस दिया है? प्रेसिडेंट ने कितनी बार अभी तक रेफरेंस दिया है सुप्रीम कोर्ट को? 15 टाइम्स। कितनी बार? देखो तुम्हारे मेटल में अभी तुम्हें बताया ना, देखो ये लिखा है ऑल सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज सेलेक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये आया हुआ ना डीजीएस में क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं मुझे इस बुक में, बट वही है कि पढ़ना नहीं है तो पढ़ेंगे नहीं तो नहीं हो पाएगा दोस्त, सब लिखा है इसमें, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज रिटन। ऑबिटर डिक्टा क्या है? रेसिड्यू सिडेंडाई क्या है? पर इंक्यूरियम से क्या समझते हो? Decision in ignorance of law, per incurium, through lack of care, per incurium. It is written on page 205 of this book. Judgment of Supreme Court is delivered in open court. This is written in 206 page. This was also a question in DJS. अच्छा, लोक अदालत किस एक्ट के तहत स्टैब्लिश किया गया है? लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट। अब पूछा पंचायत सबसे पहले कहां, तो ये देखो लिखा है नागौर राजस्थान 1959। हाँ, पंचायत, न्याय पंचायत मैंने सब लिख दिया है। अब इसमें मैंने डॉक्ट्रिन्स भी सारे लिख दिए, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। अब मैंने अभी अभी आपको बताया था, एक पेज कहाँ गया देखो, अभी कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशंस, कभी कभी सवाल आता है, फाइनेंस कमीशन, फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन, नो, पब्लिक सर्विस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, नीति आयोग। व्हाट इज नीति आयोग? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, बड़े सारे कमीशन बना दिए। कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास 340, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस 338B, 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018, ये सवाल बन सकता है 338B, यू रीड इट। National Commission for Backward Classes 2018 amendment, 102nd constitutional amendment, my dear friends. What is the doctrine of pleasure? Where it is? 310. And you inform yourself, you prepare a list. जीएस की क्लास में आपको बताएंगे भी सर, इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज ऐसे तो जानते ही होगे, अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है, या चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, वो सब चीजें। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट तो तुम जान ही रहे हो, प्रेसिडेंट हम नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट आप नहीं हो, कौन है सबको पता है, रामनाथ कोविंद जी इज प्रेसिडेंट, and
Venkaiah Naidu ji is vice president. Everybody knows Speaker Om Birla hai. But Chief Information Commissioner, Chief Vigilance Commissioner, you prepare a list. ठीक है? अच्छा, देश में नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लगी अभी तक? 3 बार. अच्छा, किसके किसके प्राइम मिनिस्टरशिप में लगी है ये? एंड जवाहरलाल नेहरू. पहला जवाहरलाल नेहरू एंड रेस्ट टू इंदिरा गांधी. क्या फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी लगी है कंट्री में? नो. अब आपको बताया है कि देखो जी, उसमें इसमें भी लिखा है 24th, 25th एंड 29th अमेंडमेंट वाज चैलेंज्ड इन केस ऑफ द भारती केस. A special bench of 13 judges decided the case. A special bench of 13 judges. So these are the questions. Special status of Jammu and Kashmir, this can be a good question. 35A. Abrogation of 370 and 35A. You just read your material. Now it is Union Territory of Jammu and Kashmir, and it will have legislative assembly also like Delhi and Puducherry. But Ladakh will not have legislative assembly. Ladakh is another one. How many languages are there in 8th schedule? बड़ा पुराना डेटा 18. 22. अब देखो, एक में पॉइंट फॉर रैपिड रिवीजन एक लिखा है मैंने. इसमें ना बहुत सारे इंफॉर्मेशन ऐसे दिए हुए हैं. जस्ट हैव ए ग्लांस. और फंडामेंटल राइट्स का भी लिखा है इसमें, कहां पर क्या चीजें हैं. ये क्लास में पढ़ाते पढ़ाते मैंने याद किया था, तो मैंने आपके लिए लिख दिया मेटेरियल में. सारे फंडामेंटल राइट को वन लाइन में करके मैंने डाल दिया. देखो, दिख रहा है आपको? डू यू फाइंड इट रेलिवेंट? इंपॉर्टेंट टाइम लिमिट्स in Indian Constitution. You see page 336. This can be important question in your examination, factual information. Now, to whom resignation is given? This is given on page 338. Vice President will give the resignation to President. Judge of Supreme Court will give resignation to President. Speaker of Lok Sabha will give resignation to Deputy Speaker of Lok Sabha. This is unique. Okay, Speaker है ना, legislative is no. Latest issue, अयोध्या dispute case. M. Sadiq वर्स एंड महंत सुरेश दास. देखो, अब ये पढ़ना बहुत जरूरी है. 5 जजेज. अब इसमें चीफ जस्टिस रंजन गोगोई थे, बट बाकी जजेज का भी नाम ध्यान करना होगा, because this case is very, very important. Chief Justice Deepak Mishra ने जोसेफ शाइन वाला केस. Indian Young Lawyer Association but State of Kerala 2019 decision, Chief Justice Deepak Mishra. Can you see this? Lifting ban on entry of women inside Sabrimala. केस का नाम पूछ लेंगे, जज का नाम पूछ लेंगे. ट्रिपल तलाक इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. अब इसके लिए जो एक्ट आ गया उसका नाम भी पढ़ लीजिए, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज. अब इसके सैलिएंट फीचर्स भी पढ़ लीजिएगा. लीगल जीके का ये सवाल हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ो. ये पेज नंबर 344 पे लिखा है मैंने कि भाई ये देखो, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ट्राई करेगा. एक्ट प्रेस्क्राइब्स पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years एंड फाइन. ऑफेंस अंडर दिस एक्ट इज कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल एंड कंपाउंडेबल. Subsistence allowance is to be paid.
हादिया केस ये पिछली बार आया था, सफीन जहान वर्सेस अशोकन के, हम ये पिछली बार आ चुका है, किसी दिन ये आ चुका है केस। मैं आपको रिसेंट केसेस और बताऊंगा इसमें। एंड सी लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अपेंडिसेस में हमने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, नो, इससे एक चीज पता चलेगा कि अभी कौन से नंबर का प्रेसिडेंट है, कौन से नंबर का वाइस प्रेसिडेंट है। दोज काइंड ऑफ फैक्चुअल क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड अर्लियर। नाउ इफ यू सी द क्वेश्चन जो मैंने देखा कि भाई यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली केम टू बी कॉल्ड नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बाय वर्च्यू ऑफ इंसर्शन ऑफ 239A। आप पढ़ोगे आपको पता चलेगा, लिखा है मैंने। कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, कौन करेगा कंट्रोल? स्टेट गवर्नमेंट, हाई कोर्ट। वही क्वेश्चन है, कोई बहुत मुश्किल है। राइट टू प्राइवेसी इज पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल? 21, एवरीबडी नोज। कोई बहुत कठिन क्वेश्चन है। विच प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस द राइट ऑफ एक्यूज्ड टू रिमेन साइलेंट? 20 वो ठीक है, इसमें 19, 20, 21, 14 है तो बहुत। हु डिसाइड्स इन पार्लियामेंट वेदर ए बिल इज मनी बिल और नॉट? द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, इसमें एक चैप्टर है उसी पे। 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016, आर्टिकल 246। अब इसमें दो आर्टिकल लिख दिया, 279A एंड 246A। 279A इज अबाउट काउंसिल, जीएसटी काउंसिल। 246A से इंट्रोड्यूस हुआ था ये। तो इस तरह के सवाल इन्होंने पूछे। मैं दूसरा भी क्वेश्चन आपको दिखाता हूं जो मुझे दिखा, किस किस तरह के सवाल आए हैं, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए आपको। ये सवाल पूछा, देखो, there is no fundamental right of a person arrested not to be detained in custody without being informed as soon as, but it is not available to whom? Generally you have fundamental right to get information etc in case of arrest or detention, article 22 says, but in which cases it is not available? Preventive detention and enemy alien, अब वही ऑप्शन है। आर्टिकल 22 जिसने पढ़ा होगा वो बता देगा, कुछ नहीं है, कोई डिटेल्ड एनालिसिस की जरूरत नहीं है, बट रीसेंट केसेस एंड इंफॉर्मेशन आर मस्ट, बट रीड आर्टिकल केयरफुली। अब उसके बाद उन्होंने पूछा अमेंडमेंट टू मेक चेंजेस इन द प्रोविजन नाउ relating to establishment and constitution of Supreme Court, amendment related to Supreme Court requires giving of assent by president। अब दूसरा ऑप्शन बना है passed by majority of not less than 2/3 and majority of present and voting, and then second ratification by resolution to that effect by legislature of not less than 1/2, both A and B, none of these। So answer is very simple, huh? Both A and B। इसमें दोनों चाहिए ना, 368 क्लॉज 2 का प्रोवाइडो है। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सबों में जब भी परिवर्तन करोगे यू नीड, ये तो लिखा है बेन एक्ट में, कई लोग यू आर ब्लैंक, यू डू नॉट रीड एट ऑल, इट मींस ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत शानदार सवाल है। आप पढ़ते ही नहीं, उसका मतलब लगता है बहुत लोग बहुत पढ़ते ही नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा लगता है तो कोई भी बता देगा 368 के क्लॉज 2 के प्रोवाइडो में लिखा है। तो और मैंने तो अपनी किताब में बहुत अच्छे से लिखा है कि क्यों ऐसा है, क्योंकि जहां जहां डिवीजन ऑफ पावर होता है, चाहे वो पार्लियामेंट से रिलेटेड लेजिस्लेटिव पावर हो, या प्रेसिडेंट गवर्नर का पावर हो, या शेड्यूल 7 हो, या पार्ट 11 का चैप्टर 1 हो, वो सब जगह है ऐसा, या शेड्यूल 7 हो, सब जगह यू नीड रेटिफिकेशन ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ स्टेट। सो प्लीज सी देम केयरफुली। वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, अभी बताया था आर्टिकल 66 में कि भाई उसमें अब फिर लिखा ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड बाय प्रेसिडेंट comes to an end after expiration of 6 weeks from reassembly of parliament, ये ऑप्शन है। फिर पूछा पंचायती राज was introduced in which state first? Current लोकसभा is 18, तभी बताया आपको। गवर्नर enjoys office at the pleasure of, टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितने हैं? तो ऐसे भी सवाल आ रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया, आपको पता है ना कि सब सवाल आया हुआ है। अब देखो ये सब हमने ना क्या किया है कि मैंने यहाँ पेज नंबर भी लिख लिया कि देखो पंचायती राज पेज 231 इस मटेरियल में दिया हुआ है, तुम्हें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। करंट लोकसभा पेज 362, इन गवर्नर एंजॉयड ऑफिस पेज 175, मैंने सब लिख दिया। ये पेज 315, पेज 192, मैं इस बुक को रेफर कर रहा हूं, इसके पेज नंबर नोट करा रहा हूं आपको, सो दैट यू शुड अंडरस्टैंड इफ आई रीड वन बुक माई वर्क इज डन, एंड रीड अपार्ट फ्रॉम दिस रीसेंट केसेस। वो भी मैं क्लास में बताऊंगा जहां तक संभव है, आपको दे दूंगा, दैट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट।
इसमें मैंने पेज नंबर लिख दिया, पेज 73, पेज 295, पेज 136, पेज 130। मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है कि इससे बाहर आया हो। आई फाइंड ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस आर देयर। सो आप, एक किताब आपको दिया है, आप पढ़ो इसको ध्यान से। इज दिस क्लियर? नहीं पढ़ोगे मर्जी आपकी है। रिसेंट केसेस एंड लीगल न्यूज वो मैं आपको जीके क्लास में बताऊंगा, सर से बोलता हूं। और आपके टेस्ट में अभी लगातार आ रहा है लीगल जीके, जो टेस्ट करा रहे हैं ना, उसमें सब में लीगल जीके का क्वेश्चन डाल रहे हैं। इज दिस क्लियर? तो आर्टिकल को ध्यान से पढ़ना है। और मेरा 2-3 यूट्यूब पे लेक्चर, एक इमरजेंसी का भी लेक्चर है, एक आर्टिकल्स का पहला लेक्चर है, थोड़ा स्लो लेक्चर है क्योंकि क्लास में पढ़ा रहा हूं, धीरे धीरे पढ़ाते हैं क्लास में, उसी को डाला हुआ है। तो बोर नहीं होना, ध्यान से सुनना, बहुत काम का है। और एक लिखा है 40 आर्टिकल्स इन 15 मिनट्स, उसको भी ध्यान से सुनना है। बहुत सारे काम आपके ऐसे ही हो जाएंगे। इज दिस ऑल राइट? आई थिंक फॉर एनी प्रिलिमिनरी दिस विल सफाइस। थैंक यू वेरी मच।